If you like the video, do subscribe and press the bell icon to get new videos. पे हमें ताज़ा दही जो बिल्कुल भी खट्टा ना हो वो भी डालना है और साथ में 1 चम्मच वनीला एसेंस भी डालना है, जो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। लेकिन उस समय पे मेरा वीडियो बंद हो गया था तो यहाँ पे आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने वो पहले से ही डाल दिया था।